Good morning, students. Welcome back to your maths class. How are you all? In yesterday's class, we have solved the exercise 9.2's question number 1, 6 and 7, which were based on the addition. And in today's class, we are going to solve the same exercise 9.2, but today we are going to solve the problems which are based on the subtraction. So in this today's lecture we are going to solve the problems which are based on the subtraction. So very first problem I'm going to solve is question number 8 from the same exercise 9.2. 9.2 का problem number 8. So we have to subtract rupees 89.50 from rupees 190.35. So आपको क्या करना है, वी हैव टू माइनस दिस रुपीज 89.50 फ्रॉम रुपीज 190.35. So first of all, write the numbers properly. Put the decimal point after the accurate digit. हर एक accurate place पे ही decimal point लिखना है. So पहले we will write number rupees 190.35. 190.35 लिख दिया. Then we have to subtract 89.50 from this 190.35. That is why minus 89.50. Remember 89. So we have to write 9 at ones place and 8 at tens place. Do not write 8 at hundreds place. 1 के नीचे 8 नहीं लिखना है because this 1 is at 100 place but this 8 is at tens place. So we have to follow the proper places while writing the numbers. So this number 89 is 2-digit number. That is why we'll write 9 at ones place and 8 at tens place. So 89, then put a decimal point after 89 and then write the other number, that is 50.50. 50. Here also you have to follow the proper places. This is ones place, this is tens place. Then start doing the subtraction. So 5 minus 0 is equal to 5. 3 minus 5 you can't do. That is why you need to take a borrow from the next place number. Next place number is 0. So again you can't take borrow from 0. So we'll go to the next place, that is 9. So we'll take borrow from 9. We are taking borrow from 9 means 9 minus 1 will become 8. So your 9 will become 8. Then this 0 will become 10. But again we are taking borrow from this. That is why 10 will become 9. Then we'll give this borrow to 3. So 3 will become 13. So 13 minus 5 will give you answer 8. So write down 8 into the answer. Then don't forget to put decimal point after it because यहाँ पे 2 digits के बाद क्या लग रहा है, decimal point. So 5, 8, 1 हो गया, 2 हो गया, then we'll put the decimal point. 2 numbers के बाद क्या आने वाला है हमारा decimal point. 1, 2, then we'll put a decimal point and then start doing this subtraction again. 9 minus 9 will give you 0. 8 minus 8 will give you 0 in the answer and 1 minus, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 के अंदर, that means it is 0. 1 minus 0 will give you answer 1. So the final answer after subtraction is rupees 100.85. Now we will move on to the word problems based on this exercise. Question number 13. I want you to solve the remaining problems, that is 9, 10, 11 and 12 on your own. Rekha bought a book for rupees 87, a pen for rupees 25.25 and watercolors for rupees 130.90. She gave one 500 rupee note to the bookseller. What did the bookseller return to her? So read the question carefully first. The one girl whose name is Rekha went to the shop, bookseller's shop, जहाँ पे book बेची जाती है वहाँ पे वो गई है
एंड फ्रॉम दैट शॉप व्हाट शी बॉट, रेखा बॉट अ बुक, एक बुक खरीदी उसने, और उस बुक की प्राइस क्या है, द प्राइस ऑफ दैट बुक इज 87.00. देन शी बॉट अ पेन मीन्स एक सिंगल पेन खरीदा है उसने, सो प्राइस ऑफ दैट पेन इज ₹25.25. देन शी बॉट वाटर कलर्स, so price of that watercolors is 130.90. So she bought 3 things from that bookseller's shop: book, pen and color, and they have mentioned the price or the cost of all these 3 things. Now इसने ये तीनों चीज़ें खरीदी, फिर उसने क्या किया, हम कभी भी जाते हैं, वेन एवर वी गो टू द मार्केट वी ऑलवेज कैरी मनी अलॉन्ग विथ अस, बिकॉज वी कांट बाय एनीथिंग विदाउट मनी. हम पैसों के बिना किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं क्या, नहीं. हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है, शॉपकीपर को पैसे देने पड़ते हैं, नोट्स या कॉइन्स देने पड़ते हैं ना. तो व्हेन शी बॉट दीज 3 थिंग्स व्हाट शी गेव दी 500 रुपी नोट टू दी बुक सेलर. रेखा ने ये तीनों चीज़ें खरीदी, बुक, पेन और वाटर कलर, एंड देन शी पेड ₹500 टू दी बुक सेलर. उसने कितने बुक सेलर को पैसे दिए, उसने बुक सेलर को 500 रुपीज़ का एक नोट दिया, लिखा है ना यहाँ पे, शी गेव 500 रुपी नोट टू दी बुक सेलर. दैट मीन्स उसने ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद पैसे दिए हैं बुक सेलर को. कितने पैसे दिए उसने बुक सेलर को, 500 रुपी नोट, मतलब 500 रुपीज़ का एक नोट दिया है उसने बुक सेलर को. देन व्हाट दे आस्क्ड अस टू फाइंड, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड व्हाट डिड द बुक सेलर रिटर्न टू हर. उन्होंने पूछा है कि बुक सेलर उसको कितने पैसे वापस करेगा. बुक सेलर जो है वो रेखा को 500 में से कितने पैसे वापस करेगा, क्योंकि रेखा ने जो 500 रुपीज़ दिए हैं वो तो ज़्यादा है, उसने जो सामान खरीदा है उससे ज़्यादा पैसे उसने बुक सेलर को दिए हैं. अभी बुक सेलर को क्या करना पड़ेगा, जितना भी कॉस्ट बनता है उन तीनों चीज़ों का, बुक, पेन और वाटर कलर का, उतना ही पैसा उसने अपने पास रखना है, और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो किसको वापस करने हैं, वो बाकी के बचे हुए पैसे उसने रेखा को वापस लौटा देने, क्योंकि रेखा ने उसको ज़्यादा पैसे दिए हैं, जितना सामान खरीदा है उससे ज़्यादा ही पैसे दिए हैं उसने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दी अमाउंट विच रेखा हैज़ टू पे टू दी बुक सेलर. पहले तो हमने क्या ढूंढना है, पहले तो हमने ढूंढना है कि रेखा को बुक सेलर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, जो सामान खरीदा है उतनी उसकी कितनी कॉस्ट हो रही है, कितनी प्राइस हो रही है. सो विल राइट डाउन द डाटा गिवन फर्स्ट. Cost of a book is 87 rupees. Cost of a pen is rupees 25.25, and cost of watercolors is rupees 130.90. So we have written the cost of all the 3 items. Now money given to the bookseller. How much money did she give to the bookseller? Rekha gave 500 rupees to the bookseller. How much she paid to the bookseller? उसने bookseller को 500 का एक नोट दिया है. Now find out the amount to be paid to the bookseller. हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि बुक सेलर को कितने पैसे देने बनते हैं रेखा को. रेखा ने अगर 3 चीज़ें खरीदी है एक दुकान से, एक शॉपकीपर से, तो उसको उस शॉपकीपर को कितने पैसे देने बनते हैं वो ढूंढ के निकालें. तो उसने क्या क्या खरीदा है, बुक, पेन और वाटर कलर. उन तीनों की प्राइस पता है हमें, उन तीनों की कॉस्ट पता है, यहाँ पे लिखी है. तो इन तीनों की कॉस्ट जब हम एक साथ ऐड करेंगे देन वी विल गेट दी अमाउंट विच रेखा हैज़ टू पे टू दी बुक सेलर. इन तीनों के एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रेखा को बुक सेलर को कितने पैसे देने हैं वो हमें मिल जाएगा. ठीक है. नाउ स्टार्ट एडिंग. 87.00 प्लस 25.25 plus 130.90. Remember to write the digits at the appropriate places. Okay, 100 place का 100 place में जाएगा, 10s place का 10s, 1s का 1s में जाएगा, and just remember to put decimal points after the appropriate places.
So we'll start adding the numbers. 0 plus 5 plus 0 is equal to 5. 0 plus 2 plus 9 is equal to 11. We'll write 1 in the answer and then we'll take the 1 into the carry forward. Then don't forget to put decimal point because there is a decimal point after 2 digits. So 5 और 1 के बाद यहाँ पे आएगा decimal point. Then 1 is carry forward. 7 plus 1 is 8. 8 plus 5 is 13. So write 3 in the answer. 1 will be taken as carry forward. It will move to the next digit. 8 plus 1 is 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 3 is 14. So we'll write 4 in the answer and 1 will be taken as the carry forward. So it will move to the next digit. So यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा. 1 plus 1 is 2. So the amount which Rekha has to pay to the bookseller is 243 rupees. ये क्या है 243 rupees? It is the amount which Rekha has to pay to the bookseller after buying the 3 things. That those are book, pen and watercolors. So that is why we have added the cost of book, cost of pen and cost of watercolor together to find out the amount which the Rekha has to pay to the bookseller. अभी हमको मिला रेखा को बुक सेलर को इतने पैसे देने थे 253.15 देने थे, बट उसने एक्चुअली कितने दिए हैं पैसे उसको? रेखा ने उसको दिया है एक 500 रुपीज़ का नोट. तो रेखा ने इससे ज़्यादा ही पैसे दिए हैं, जितना सामान खरीदा है उससे ज़्यादा पैसे दिए. दैट इज़ वाई द बुक सेलर हैज़ टू रिटर्न सम मनी to the Rekha and we have to find how much money this bookseller has to return to the Rekha. To find that we have to do the subtraction. Money returned to the Rekha by the bookseller is equal to money given to bookseller minus amount to be paid to the bookseller. तो money given to the bookseller हमें पता है, bookseller को उसने कितने पैसे दिए थे? उसने दिए थे 500 रुपीज़ का एक नोट. सो बुकसेलर को दिए हुए पैसे दैट मीन्स 500 माइनस क्या करना पड़ेगा? अमाउंट टू बी पेड टू द बुक सेलर. अमाउंट टू बी पेड टू द बुक सेलर मीन्स इट इज़ द एडिशन ऑफ price of a pen, price of a book and price of a colors which we have found over here. Amount to be paid to the bookseller is nothing but the addition of the cost of all these 3 items and that is 243.15. So start doing subtraction. 500 minus 243.15. 500 में से 243.15 हमने माइनस करना है एंड जो भी आता है उसका आंसर यहाँ पे लिखना है. So 0 minus 5 we can't do. That is why we have to take a borrow from next digit. This is also 0. Then we'll move to the next digit. This is also 0. Then we'll move to the next digit. This is also 0. Then we'll move to the next digit. So we'll take borrow from 5. So 5 minus 1 will become 4. तो 5 को कट करके हम 4 लिखेंगे. So this 0 will become 10. But we are taking borrow from this. That's why 10 will become 9. Again we'll give this borrow to this 0. This 0 will become 10. So again we are taking borrow from this 10. So this 10 will become 9. We'll give this borrow to this 0. This 0 will become 10. But again we are taking borrow from this 0. So this 0 will become 9. And then we are giving the borrow to this 0. So this 0 will become 10. तो ये 10 बन गया. तो 10 minus 5 कितना आया? 5. So 9 minus 1 is 8, 9 minus 3 is 6, 9 minus 4 is 5, 4 minus 2 is 2. And remember to put a decimal point after the 8 because यहाँ पे decimal point 2 digits के बाद लगा है, 1 और 2 के बाद आता है decimal point. That is why 1, 2 यहाँ पे आएगा decimal point. So amount or money returned to the Rekha by the bookseller is ₹256.85. So 500 में से उसको कितने वापस करने पड़ेंगे उसको? वो सिर्फ अपने पास 243 रुपीज़ रख लेगा. बुक सेलर विल कीप दी 243.15 रुपीज़ with him and the remaining money will return back to the Rekha. तो इसीलिए हमने 500 minus 243.15 किया and we got the amount which the bookseller has to return to the Rekha.
Next question number 15. Aslam sold some old newspapers, books and iron pieces for rupees 75.0, then rupees 42.80 and rupees 190 respectively. Then he bought atta for rupees 98.90 and rice for rupees 104.25. Find the actual amount left with him. तो यहाँ पे क्या करना है हमने, पहले तो एक असलम नाम का शॉपकीपर है, ही सोल्ड मीन्स उसने कुछ बेचा है। उसने क्या क्या बेचा है, उसने पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, बुक्स बेची है और आयरन पीसेस बेचे हैं। और कितने कितने में बेचे, ही सोल्ड दीज न्यूज़पेपर्स फॉर 75.5 रुपीज़, देन ही सोल्ड बुक्स फॉर 42.80 रुपीज़ एंड देन ही सोल्ड आयरन पीसेस फॉर 190 रुपीज़। ओके, इसने इतना सारा सामान बेचा है। बेचना मतलब, उसने बेचा मतलब ही गॉट सम मनी और ही रिसीव्ड सम मनी आफ्टर सेलिंग दिस आइटम्स। कोई भी चीज़ हम बेचते हैं तो वो चीज़ बेचने के बाद हमें क्या मिलता है, उसके बदले पैसे मिलते हैं, मनी मिलता है। तो उसको ये और ये सारे रुपीज़ मिले हैं आफ्टर सेलिंग दीज थिंग्स। न्यूज़पेपर, आयरन पीस एंड बुक्स को सेल करने के बाद ही गॉट दीज मनीज विथ हिम, रुपीज़ 75.05, रुपीज़ 42.80 एंड रुपीज़ 190 विच ही गॉट और ही गेन्ड आफ्टर सेलिंग दीज थिंग्स। देन what he did, then he went to the market and he bought atta for 98.9 rupees, rice for 104.25 rupees. सो ये जो असलम है, पहले तो उसने कुछ चीज़ें बेची जिस वजह से उसको पैसे मिल गए, और उन्हीं पैसों से, जितने पैसे उसको मिल गए उन्हीं पैसों से उसने फिर से क्या करा, जाके मार्केट में जाके कुछ और चीज़ें खरीदी। अभी बेची नहीं है उसने, अभी उसने सामान खरीदा है। तो वेन एवर वी बाय समथिंग वी हैव टू पे मनी फॉर दैट थिंग, वी डोंट गेट मनी इफ़ वी बाय समथिंग। उल्टा, इफ़ वी बाय समथिंग we have to pay the money. If we sell we get the money and if we buy we have to pay the money. अगर हम सामान बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, अगर हम सामान खरीदेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो असलम ने तो पहले सामान बेचा इसलिए उसको पैसे मिले, फिर उसने क्या किया, सामान खरीदा इसलिए उसको पैसे देने पड़ेंगे या उसके पैसे कम हो जाएंगे। जितने भी उसको पहले बेचने के बाद पैसे मिले थे उसमें से फिर ये जो सामान उसने खरीदा है उसके पैसे कम हो जाएंगे। सो विल डिस्कस इट वन बाय वन। पहले तो राइट डाउन डाटा गिवन। सेलिंग प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर, सेलिंग प्राइस मीन्स बेचने वाली कीमत कितनी थी न्यूज़पेपर की वो लिखो। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स लिखो। सेलिंग प्राइस ऑफ आयरन पीसेस राइट डाउन। देन मनी स्पेंट फॉर आटा, मनी स्पेंट मीन्स द कॉस्ट ऑफ आटा, दिस इज द मनी स्पेंट, बिकॉज ये उसने पैसे दिए हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे मनी स्पेंट, बिकॉज आटा उसने खरीदा है 98.9। देन मनी स्पेंट फॉर राइस इज 104.20 रुपीज़। मनी स्पेंट ऑन राइस, कितना है राइस का प्राइस, 104.25. To buy rice he has to pay 104.25. That's why we have written spent. Now amount left with Aslam. How will we find amount spent by amount left with Aslam? हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कितने पैसे असलम के पास बचे हैं? Amount left with Aslam means we have to find the money which is left with Aslam after buying the थिंग्स। कुछ सामान खरीदने के बाद असलम के पास कितने पैसे बचे हैं वो हमने ढूंढना है। तो पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि मनी विद द असलम एंड देन वी विल फाइंड द मनी लेफ्ट विद द असलम। ठीक है।